Try Live Space. भारतीय पुलिस सेवा के 71 बैच के Good morning, viewers. On behalf of Director Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, I welcome you all to watch live passing out parade, Dikshant Samaroh of 71 regular recruit Indian Police Service probationers. Today, they are passing out of the portals of National Police Academy in the service of the nation. Ladies and gentlemen, a total of 6 platoons of IPS professionals are participating in today's passing out parade, and this prestigious parade is commanded by Ms. Kiran Shakti Devi of Tamil Nadu, Karnataka. I invite your attention towards the fourth wall on the insignias of the state and central police organizations. The respective flags of these formations can also be seen fluttering in the breeze over these insignias. किले की प्राचीर पर लहराते हुए झंडों के सामने परिवीक्षाधीन अधिकारी मानो कह रहे हों, ये ध्वज है हमारे गौरव, हम इन्हें न झुकने देंगे, इनकी रक्षा की खातिर हम प्राण अपने तज देंगे. From the center of the Fort Wall Gate, the first flag is off towards the left, National Police Academy, followed by Jharkhand, BSF, ITBP, Nagaland, West Bengal, Chandigarh, Nepal, Goa, Tripura, Delhi, SPG, Sikkim, RPF, Jammu and Kashmir, CRPF, Kerala, CISF, SSB, NSG, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Uttarakhand and Meghalaya. From the center of the Fort Wall Gate towards the right, the first flag is of Indian Police Service, followed by Andaman and Nicobar, Puducherry, Maharashtra, Gujarat, Haryana, Uttar Pradesh,
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप। कुछ ही क्षणों में निशान टोली परेड मैदान में प्रवेश करेगी। Ladies and gentlemen, may I draw your attention towards the quarter guard on your right, from where the Academy's color is just about to enter onto the parade ground. All the spectators are requested to stand up in their places as a mark of respect to the color when it passes through the parade ground, and the officers in uniform shall salute. दर्शकों से अनुरोध है कि निशान के परेड मैदान में प्रवेश करते ही निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। The prestigious Nishan Tolley is being commanded by Inspector DI Suryabhan Singh, and Nishan is being carried by Inspector DI Satish Mali. अकादमी की उत्कृष्ट सेवाओं तथा उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय ने 15 सितंबर 1988 को अकादमी की 40वीं वर्षगांठ पर अकादमी को निशान प्रदान किया था। निशान में तथा केंद्रीय पुलिस संघ की पहचान बनी। कड़े प्रशिक्षण के पश्चात भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी आज दीक्षांत परेड के अवसर पर आत्मविश्वास से भरे हुए खाकी वर्दी से गर्वित और गौरवान्वित इनका तेजस्वी मस्तक, इनकी मानसिक और शारीरिक शक्ति से जन्मा एक अदम्य साहस, इनकी इस दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ परेड मैदान में खड़े होना मानो कह रहा हो, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का
आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं है, पानी है। Short while from now, Joint Director Basic Course, Shri N. Madhusudan Reddy, will be amongst us. May I have your kind attention, please? Joint Director Basic Course, Shri N. Madhusudan Reddy has arrived. Let's welcome him. Shri N. Madhusudan Reddy is an IPS officer of 1997 batch, born on undivided Andhra Pradesh cadre. He is a graduate in electrical engineering from the College of Engineering, Anantapur. His first posting was as ASP of Armoor Subdivision of Nizamabad district. On promotion, he served as Additional SP Operations in Karimnagar district, as SP of Nizamabad and Kurnool districts, and as DCP of Central Zone, West Zone and South Zone in Hyderabad city. In the rank of DIG, he worked as Commissioner of Police, Vijayawada city, and as DIG Counter-Intelligence. As IG, he handled personal administration and provisioning and logistics wing in the police headquarters. He has vast experience in urban policing, anti-extremist work and counter-terrorism. Recognizing his dedication towards the service of the nation, he was awarded Police Medal for Gallantry in the year 2003, Police Medal for Meritorious Service in the year 2013, and Antrik Suraksha Seva Medal in 2005. Presently, he is serving this prestigious academy since November 2017. May I have your kind attention, please? Joint Director Administration and Senior Course, Shri Amit Garg has arrived. We welcome you, sir. Shri Amit Garg is an IPS officer of 1993 batch, born on undivided Andhra Pradesh cadre. He did his MA in Sociology and Masters in Philosophy from JNU Delhi. He served in Vizianagaram district as SP and also was on deputation with CBI as SP CBI Kolkata and Dhanbad.
He held several other important assignments in Hyderabad City Police as DCP Crimes, DCP West Zone Law and Order, Joint CP Special Branch, Additional CP Law and Order, Additional CP Traffic, and Additional CP Crimes. He was Commissioner of Police Vijayawada in the rank of DIG and Commissioner of Police Visakhapatnam in the rank of IGP. He was CID Chief in the rank of ADG in the state of Andhra Pradesh. Before joining National Police Academy, he was Chairman of State Level Police Recruitment Board in Andhra Pradesh. Recognizing his dedication towards the service of the nation, he was awarded the Indian Police Medal for Meritorious Service in 2011, and he is also a recipient of Antrik Suraksha Seva Padak. At present, he is serving this academy since 28th February 2020. आज की इस दीक्षांत परेड में कुल 129 परिवीक्षाधीन अधिकारी भाग ले रहे हैं, जिसमें 28 महिला अधिकारी शामिल हैं। आज की इस भव्य दीक्षांत परेड का नेतृत्व कर रही है तमिलनाडु कैडर की परिवीक्षाधीन अधिकारी सुश्री किरण श्रुति डीवी। प्लाटून 1 का नेतृत्व कर रहे हैं अगमुट कैडर के परिवीक्षाधीन अधिकारी श्री कलैवनन आर। प्लाटून 2 का नेतृत्व कर रहे हैं मध्य प्रदेश कैडर के परिवीक्षाधीन अधिकारी श्री आदित्य मिश्रा। प्लाटून 3 का नेतृत्व कर रहे हैं महाराष्ट्र कैडर के परिवीक्षाधीन अधिकारी श्री देशमुख यतीश विजयराव। निशान टोली का नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक सूर्यभान सिंह और निशान को थामे हुए हैं निरीक्षक सतीश माली। प्लाटून 4 का नेतृत्व कर रही है महाराष्ट्र कैडर की परिवीक्षाधीन अधिकारी सुश्री आंचल दलाल। प्लाटून 5 का नेतृत्व कर रहे हैं झारखंड कैडर के परिवीक्षाधीन अधिकारी श्री के विजय शंकर। Ladies and gentlemen, may I have your kind attention, please? Director of the Academy, Shri Atul Karwal has arrived. Let's welcome him. परेड कमांडर परिवीक्षाधीन अधिकारी सुश्री किरण श्रुति डीवी परेड का निरीक्षण करने का अनुरोध करने हेतु मंच की ओर अग्रसर। प्लाटून और निशान परेड पर परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। Shri Atul Karwal is an IPS officer of 1988 batch, born on Gujarat cadre.
He completed his master's in business administration. He served as ASP and SP in many districts of Gujarat. He also served as Assistant Director Outdoors in Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad from the year 1998 to 2002 and trained 4 batches of IPS officers. As IG CRPF Srinagar, he supervised 23 battalions for counter-terrorist operations and law and order. He was also IG training, IG and additional DG Pers, CRPF before joining this academy as director on December 27, 2019. Shri Karwal was adjudged the best officer trainee of his batch during his basic training at this academy. Recognizing his dedication towards the service, he was awarded Police Medal for Gallantry on the occasion of Republic Day 2020 and First Bar Police Medal for Gallantry on the occasion of Independence Day 2020. In addition to these prestigious medals, Shri Karwal was also awarded President's Police Medal for Distinguished Service in the year 2016 and Police Medal for Meritorious Service in 2010. Adding more feathers to his illustrious career, he has also been decorated with the Kathin Seva Padak for his duties in Srinagar, Parakram Padak for an operation in Kashmir, Ati Utkarsh Seva Padak, and commendation discs by Director SVP NPA, DG Jammu and Kashmir, and 5 discs from DGC RPF. He is an ultra-marathoner and a triathlete. He completed his 12 weeks police commando course with National Security Guard in 1994. He won a silver medal in individual tent pegging in the All India Police Equestrian Meet in 1997. He is also a black belt holder in martial arts and is well trained in scuba diving and skydiving, and also scaled Mount Everest on 22nd May 2008 as a member of Mount Everest expedition. At present, he is serving this prestigious academy as director since December 27, 2019. 71वें बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की दीक्षांत परेड का निरीक्षण करके
मंच की ओर लौटते हुए अकादमी के निदेशक महोदय श्री अतुल करवल महोदय का आभार व्यक्त करते हुए हम पुनः मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कुछ ही क्षणों में राष्ट्र ध्वज टोली मैदान में प्रवेश करेगी। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि राष्ट्र ध्वज के परेड मैदान में प्रवेश करते ही राष्ट्र ध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। और सज्जनों, राष्ट्र ध्वज टोली की कमान संभाले हुए हैं श्री सोमवीर निरीक्षक एवं अकादमी ध्वज को थामे हुए हैं श्री पूरन सिंह तंवर निरीक्षक। दीक्षांत परेड का यह ऐतिहासिक दिन और शपथ ग्रहण करते 71वें बैच के नवयुवा परिवीक्षाधीन अधिकारी धन्य है वो माँ, वो पिता, वो गुरु, वो विद्यालय प्रांगण जिसने ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए ऐसे सुपुत्र और सुपुत्रियाएं राष्ट्र की सेवा में अर्पित किए। तन, मन और धन से मातृभूमि को अपनी सेवाएं देने का संकल्प लेकर ये युवा आज
राष्ट्र यज्ञ में अपनी निष्ठा सिद्ध करने का प्रण ले रहे हैं। मानो कह रहे हो कि मेरे मस्तक के सिंहासन पर भारत माता आसीन रहे, मैं सदा देशभक्त रहूं, ये देश सदा स्वाधीन रहे। भारत की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है तिरंगा झंडा। केसरिया, सफेद और हरा, इन 3 रंगों के मेल से सुसज्जित तिरंगा प्रतीक है हमारे बलिदान का, प्रतीक है हमारे शौर्य का, प्रतीक है हमारी खुशहाली का, हमारे धैर्य का, सत्य का, शुद्धता का, समरसता का और प्रतीक है हमारे विश्वास का। ग्रहण का यह पवित्र दिन परिवीक्षाधीन अधिकारियों के जीवन में एक मील का पत्थर है, श्रेष्ठता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला एक पुण्य पथ है, सफलता की राह में एक अविरल पायदान है। भारतीय पुलिस सेवा में पड़ने वाले कदम अनुभव कराएंगे नए उत्तरदायित्व का, नूतन गंतव्यों का और नई जिम्मेदारियों का। कठिन प्रशिक्षण के ये दिन अविस्मरणीय भावों की तरह सदैव सुरक्षित रहेंगे और आज ली हुई यह शपथ जीवन भर याद आएगी। जीवन के प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक दुर्गम मोड़ पर हमें सशक्त बनाएगी और जागृत रखेगी अपने कर्तव्यों के प्रति। शपथ ग्रहण का यह पावन दिन, ये शपथ है तिरंगे के प्रति, ये शपथ है राष्ट्र के प्रति, ये शपथ है समाज के प्रति और ये शपथ है संस्थान के प्रति, अपने परिजनों के सम्मान के प्रति और अपने स्वाभिमान के प्रति। ये शपथ है निष्ठा की, ईमानदारी की, न्याय की और संवेदी पुलिस के रूप में एक कुशल प्रशासक की। मानो ये नवविवाह कह रहे हो, धरती हमारी, गगन हमारा, नदी हमारी, चमन हमारा, इन सब की रक्षा कर, यही तो है अब धर्म हमारा। इस संदेश के साथ शपथ लेते 71वें बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारी। Ladies and gentlemen, the eminent opportunity of carrying the national flag is given to Inspector DI Somveer, and Inspector DI Puran Singh Tawar is carrying the Academy's flag. The Indian national flag represents the hopes and aspirations of the people of India. It is the symbol of our national pride. Over the last few decades, several people, including members of armed force, have unselfishly laid down their lives to keep the tricolor flying in its full glory. A thoughtful mind, when it sees a nation's flag, sees not the flag only, but the nation itself. And whatever may be its symbol, its insignia, he reads essentially in the flag the government, the principles, the truths, and the history which belongs to the nation that sets it forth. The ceremonial touching of the national flag by the IPS probationers is a precursor to the oath of allegiance to the Constitution of India that the IPS probationers will be taking today. They will dedicate themselves in the service of the nation and pledge to serve the people as per the ideals of the police service, ensuring justice for all without fear or favor.
Now, Joint Director Basic Course, Shri N. Madhusudhan Reddy, will administer the oath to the IPS probationer of 71 RR batch. मैं शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति एवं भारतीय पुलिस के आदर्शों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति न्यायपूर्वक व्यवहार करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। The national flag is about to leave the parade ground. All the invitees are requested to stand up in their places as the national anthem will be played as a mark of respect to the national flag when it passes through the parade ground, and the officers in uniform shall salute. दर्शकों से अनुरोध है कि राष्ट्रध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाए तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें।
गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। देश के लिए मर मिटने की कस्में खाते, जोश में भरे हुए अपने स्वरों में राष्ट्र सेवा का तराना छेड़े, आंखों में अपने देश का अमिट स्वाभिमान लिए, बैंड की मधुर धुन पर मार्च करती हुई 71वें बैच के भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की 6 टुकड़ियां और निशान, जिनका आत्मविश्वास बताता है कि इन्हें उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कदम से कदम तथा हाथ से हाथ मिलाकर देश चाल में आगे बढ़ते 71वें बैच के नवयुवा परिवीक्षाधीन अधिकारी। Ladies and gentlemen, this prestigious parade consists of 129 IPS probationers, including 28 lady IPS probationers. And this prestigious parade is being commanded by Ms. Kiran Shruti, DV of Tamil Nadu Cadre. She is the proud winner of the Prime Minister's baton for the best all-round IPS probationer of 71 RR batch. Platoon number 1 consists of 21 IPS probationers and is being commanded by Shri Kalaivanan R of Agmut Cadre. He is the winner of Shri Bhupnanda Mishra Memorial Trophy for the second best all-round probationer of 71 RR batch. Platoon number 2 consists of 21 IPS probationers and is being commanded by Shri Aditya Mishra of Madhya Pradesh Cadre. He is the winner of the Vice President of India's Trophy for exemplary conduct. Platoon number 3 consists of 21 IPS probationers and is being commanded by Shri Deshmukh Yatish Vijay Rao of Maharashtra Cadre. He is the winner of the Jaipur Cup for PT. The prestigious Nishan Toli is being commanded by Inspector DI Surya Bhan Singh, and Nishan is being carried by Inspector DI Satish Mali. Platoon number 4 consists of 22 IPS probationers and is being commanded by Ms. Achal Dalal of Maharashtra Cadre. She is the winner of 1958 batch IPS Officers Trophy for the best lady outdoor probationer. Platoon number 5 consists of 21 IPS probationers and is being commanded by Shri K. Vijay Shankar of Jharkhand Cadre. He is the winner of the IPS Association Sword of Honor for the best outdoor probationer of 71 RR batch. Platoon number 6 consists of 21 IPS probationers and is being commanded by Shri Tushar Gupta of Punjab Cadre. He is the proud winner of the Tong Cup for equitation. The beautiful band contingent of instrumentalists is led by Bandmaster Rakesh Babu of SVP NPA. This beautiful band contingent includes 3rd Battalion TSSP Brass Band Ibrahim Padnam, 12th Battalion TSSP Pipe Band Nalgonda, RPF Brass Band Maulali, SVP NPA Brass Band Hyderabad. The band is bringing up every moment alive. The synchronized marching of the troops is revealing the actual meaning of uniform and uniformity. The Academy has trained them to be fearless in action and steadfast in deeds. Ambitious, courageous, determined are these young officers marching confidently to the beats of the drum, marching in unison, heralding a dawn of new era. These platoons consist of smartly dressed up, energetic, young and smart members of the Indian Police Service marching with their moral high to the tune of the band in proper alignment. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय पुलिस सेवा के लिए ऐसा नेतृत्व प्रदान करना है जो साहस, गर्व और समर्पण के साथ जनता के प्रति उत्कृष्ट सेवा भावना रखते हुए पुलिस बल को आगे बढ़ा सके तथा देश का उत्तरोत्तर विकास में सहायक हो सके।